A matchup for the history books, folks. Welcome back. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Nordwind Gaming. And ever since the commencement of this season's campaign, we were hoping we get to see this. We were hoping we get to see the Titans collide. Yes, it is finally come true. It is going to be FC Goa taking on Bengaluru FC. Now, TT, both these teams haven't lost a game yet. Last week also we saw FC Goa going up against Mumbai City. FC, they managed to win that one through. It was a close game, but still a victory nonetheless. And Bengaluru FC, there have been clubs that have pushed them just to the edge, just to the precipice, but nobody has managed to just throw them off the cliff. And they still haven't lost a game yet. So it's going to be exciting. But your pre-game thoughts? इस गेम के ऊपर कोई भी थॉट्स देना आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम लोग जो भी कहें इस गेम के लिए कम हो जाएगा एंड इसमें कुछ भी हो सकता है. स्पेशली मैं तो देखना चाहता हूँ ये दोनों टीम्स के बीच में एक वीरंत है, वो तो सही है, दोनों क्लब्स फेरने वाले हैं, लेकिन मैचअप में मैं देखना चाहता हूँ कि एक तरफ रहे वंशज एंड दूसरी तरफ हम लोग को चरणजोत दिखे. हो गया, जिंदगी भी सफल, दिन भी सफल और सब कुछ हो चुका है सफल, जिसके लिए सब लोग कर रहे थे वेट. सीजे वर्सेस वी शर्मा फिक्सेस, वो दिन आ चुका है. खुश हो जाइए, आप eISL में हैं. मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू सिट डाउन, चिल, गेट सम chips and some beverages and watch this game unfold, because both these players are just so good, right? And not just them, right? When you're looking at the second matchup, that is Shagnik and Adi Zima, even when Dugal had come in, he was saying that every single club is just scared to go up against FC Goa. The only club that you could say is not scared maybe is Bengaluru FC. And this is where they finally, we could see somebody beating that mega titans. These are like, they're literally, FC Goa literally the Thanos of the Avengers arc, and it takes a lot to go on and beat somebody like them. But yes, that's the beauty of this sport. No team is unbeatable. At some point somebody comes in and plays FIFA that will sort of kind of impress you and just kind of bind a spell over you, and that is something that Charanjot is capable of doing. But let's just assume CJ has won his first game. What happens in the next two? Because FC Goa, the best co-op team, and when it comes down to Adi Zima, this guy never loses. What do you do? I think it's too tough for Sagnik at the point, क्योंकि देखिए Sagnik बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन बात उधर सेम जगह पे आ जाते हैं. eISL के बाहर उनके जो प्रॉब्लम्स है वो फिक्स करते हुए देखते हैं आदि सीमा. सो कहीं ना कहीं जो है इधर जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ऐसे भी हो रहा है वैसे भी हो रहा है. मतलब सीधा भी अगर आप देखोगे तब भी होगा, क्योंकि आदि सीमा एक भी मैच नहीं हारी है. ऑन द अदर हैंड सागनिक के ऊपर थोड़ा बहुत कभी कभार प्रेशर आ जाता है. कुछ गेम्स ऐसे हुआ है कि वो एकदम मजे में खेले हैं और वो हार गए, दैट्स ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चरणजोत आगे लेके चले जाते थे, फिर कोऑप पे भी वो जीत जाते थे, तो देन वो कर सकते हैं. लेकिन कुछ मैच में जब उनके ऊपर प्रेशर आता था वो कुछ ज्यादा ही जो है वो सॉर्ट आउट होते हुए देखने के लिए मिले हैं. लेकिन उस जगह पे जब उनके सामने आएंगे आदि सीमा, जो उनके फॉर्मेशन को फिक्स करते हैं यूजुअली बाहर, तो तब क्या होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो पहला गेम है मुझे लगता है कि बाय एनी हाउ इधर ड्रॉ नहीं जाना चाहिए. मैं ड्रॉ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा. इस पार या उस पार कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कोई ना कोई जीतो. कोई तो रोक लो FC को. अभी तक कोई भी टीम ये हासिल नहीं कर पाई है, and that is something that is kind of making me wonder, do we just hand them over the trophy at this point? Because they've been nigh unstoppable literally every single game. Let's just say we've seen Vanchas dropping a few games, but suddenly then they go on to win their co-op, and Adi Zima, he does something miraculous, something magical.
And this is where I was kind of thinking that what Bengaluru FC will be doing is get Shagnik to play the first game, and CJ should handle the pressure if anything goes wrong. Because I guess this is one of those games where the co-op matchup will be the most interesting one, because that sort of will be a decider for me. Whoever wins the co-op has a major advantage heading into the third game. If FC Goa just goes on to win the first two, then it's pretty much done and dusted. But from the likes of it, from what you can just speculate, it is going to go down till the third matchup, because these teams, these two clubs have the caliber, have the players, the right players. And this is not just to kind of go on top of the table, because Bengaluru FC, they can achieve that. No, that's not going to happen. They've still got 2 games drawn. So FC Goa, they're still going to have the top spot. One good thing for both these clubs is that both of them are pretty much qualified for the playoffs. So that pressure won't be there anymore, that we have to win, otherwise we won't qualify, right? What will be on the line is the bragging rights, because if Bengaluru FC get to do that, they will be the only club in eISL that has bested FC Goa, which nobody has achieved so far. But if FC Goa win this one, another feather to their cap, they've defeated Bengaluru FC also. And yes, आज के दिन के बाद मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि कोई एक ही टीम बचे जो अनबीटन रहे. ड्रॉ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सा वो सिंगल टीम होने वाला है जो आज के दिन के बाद अनबीटन. तो फाइनली बात कर रहे थे, उसी के साथ साथ ये तैयार हो चुका है पिच, सब प्लेयर्स आ चुके हैं और किक ऑफ भी होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है. लेफ्ट टू राइट इधर अटैक करते हुए देखेंगे बेंगलुरु एफसी. ऑन द अदर हैंड राइट टू लेफ्ट इधर एफसी गोवा. शुरुआती स्टेज में पहले ही जस्ट 51 सेकेंड्स के अंदर इधर एक टैकल हुआ मोस्टली, और शायद एडरसन को बाहर भेजने वाले. Yeah, I think that is customary. Just gets it in for the chem maybe. But yep, CJ has been doing that ever since his first game. And right now, Bengaluru FC from left to right in their blue kits, and FC Goa from right to left. The orange, the Gores. All right, already building up chance, and there you go. Oh, I think it was an outside footer shot, and V Sharma almost managed to edge pass through. But for V Sharma on a very personal, individual level, it's going to be such a gigantic task to take on CJ, one of the best in the country so far. But V Sharma has had an exceptional run in the eISL. The ball stolen in a very crucial position, and there you can see the new Lucio card on display. Last we had seen Lucio was I think his World Cup Heroes card, but this time we've got a Trophy Titan hero Lucio with a 91. And if that card wasn't good, this makes it much more better. As Ronaldinho, again a back and forth passing going on, and V Sharma. I think Duggal had also specified how good V Sharma has been, especially in this campaign. And with the kind of plays that he makes ever, so never really tilting under pressure. And CJ, we know this lad is magical. He can do wonders. Let's see what can he get out of this game. वंशज हालांकि इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि जब से आए हैं तब से बैक टू बैक अटैक चलता जा रहा है. इस बार एक गलती हुआ था, हर्नांडेज गलती सुधार भी लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा और कुछ मिली सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम दे देते तो एम्बापे उधर से ही शूट ले लेते और शायद पहला गोल आ सकता था वंशज के तरफ से. बट एज ऑफ नाउ चरणजोत राइट हैंड साइड से हकीमी, बट लूशियो, ये प्लेयर हमेशा इसी वजह से गो टू चॉइस रहता है. कोई भी अगर प्रोफेशनल प्लेयर की बात किया जाए, या फिर अगर हम लोग अभी मेटा गार्ड्स की बात करें, तो लूशियो वन ऑफ देम. बट इस बार एडा मिलिटाओ को खिला जा रहा है, क्योंकि 3 डिफेंडर्स के साथ इधर गए हैं, 3 सेंटर बैक के साथ, और उसी के बीच में अटैक में प्लेयर एम्बापे. वाओ, व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ पास एंड व्हाट अ फिनिश. वंशज वो दिखाते हुए कि इस टूर्नामेंट के अंदर क्यों उनका क्लब अभी भी
अनबीटन रहे हैं और अभी भी वो टॉप पे राज कर रहे हैं। चरणजोत वी नो इंडिया के टॉप प्लेयर में से आते हैं, या फिर हम लोग टॉप प्लेयर भी कह सकते हैं। बट इस बार शुरुआत जो है वो वंश शर्मा की तरफ से लाजवाब तरीके से हुआ है। You know, you could see that happiness on V Sharma's face when he scored that first goal. It's so difficult against CJ, but now CJ looks angered as Sas is still remaining, and V Sharma manages to just put the ball out of play, out for a corner, and CJ is out for blood over here. At this point, you know, you could see him perform a miracle, a long cross being taken finally. You don't get to see that much often. Ball being stolen at a very crucial area, but still V Sharma manages. And this is what, you know, separates V Sharma from the rest. Never really crumbles, especially against a player like CJ. You would always be on your toes, and he realizes that, gives him that respect, but at the same time does not lose his calm, does not lose his composure. And that is the reason why he's managed to score that first goal. That was an absolute beautiful one. The right pass, you could see that goal for Mbappe. Just had to, you know, kind of just, you know, just tap the shot in. And that is what he did. And Mandusar left stranded with R9. Another chance in the making. V Sharma, you could see how he's controlling the ball really. And CJ trying to fight for it. And a little bit of a room, a step over. Intent was shown. But now CJ is back on a counter. वाह, जिस तरीके का मैच हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ उसी तरीके से अभी भी चलता हुआ दिख रहा है, फुल इंटेंसिटी के साथ और फुल एंड टू एंड डायरेक्ट फुटबॉल खेला जाता हुआ। इधर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा। जब जिसको बॉल मिल रहा है वो डायरेक्ट आगे एडवांस करते जा रहे हैं बॉल को, एंड उसी के साथ अटैक के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। De Bruyne, नाइस पास टुवर्ड्स हकीमी, राइट हैंड साइड से ओवरलैप नहीं करेंगे, कटिंग करते हुए देखने के लिए मिले। एक पास की जरूरत है, बट हकीमी व्हाट एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। चरणजोत हकीमी के साथ शायद ऐसा गोल ये पहली बार देखने के लिए मिला है eISL सीजन 2 के अंदर, और वो शायद चरणजोत ही कर सकते थे। Oh my goodness, who would expect Hakimi to do a step over and take a shot? You know, if CJ's done that, you know, players would consider trying Hakimi as a striker, because that was a clinical one. That was a killer goal. And now we are all back to where it began. Even Stevens at this point, where CJ, look at him go. You know, constantly building up those plays, but V Sharma needs to recover from here. And CJ's already, you know, bent down, which means he's got his game face on. But V Sharma has got to find a way through. A little bit of a sliding tackle intent by CJ. He passed him. Nice driven pass. Oh, Ronaldinho unable to keep the ball. पंचज अपने अटैक को तो काफी ज्यादा बेहतर बना के रखे हैं, लेकिन कभी कभार क्या हो रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो उतना गेम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं जस्ट एम्बापे मौजूद ही थे, उनके राइट हैंड साइड पे खड़े हुए थे हकीमी, सो वो जो विड्थ चाहिए होता है पासिंग के लिए वो नहीं मिला था। और देखते हैं क्या चेंजेस लेके आते हैं। हालांकि ये जो पहला 45 मिनट्स है, ये पहला 45 मिनट्स एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। और आई थिंक सब के सब एक बार के लिए अपना जो आग का जो पलक है वो नहीं झपका पाए थे, सिर्फ प्लेयर्स नहीं, इधर ऑडियंस भी, क्योंकि हर एक मोमेंट पे कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही सारा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन बॉल पोजीशनिंग देखिए, एफसी गोवा विद 62% पोजीशनिंग, बट बेंगलुरु एफसी उनको अब जितना भी होल्ड करा के रखो वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं जिससे कि गोल आ जाए, और वो एक बार फिर से होता हुआ दिखा। शॉट एक्यूरेसी दोनों का ही 100%, दोनों में से दोनों ही शॉट ऑन टारगेट थे। ओह माय गॉड, कुछ इस तरीके का ही परफॉर्मेंस शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं। Yeah, I think at this point, you know, V Sharma should be taking the moment. Just needs to calm down a little bit. He understands, right? He knows that he's beaten the greats, but CJ is like the final boss, right?
and to take him down would be a huge morale booster, especially entering into the playoffs, right? Would just propel V Sharma to be a lot more confident. But it's going to be so much difficult. You could see, right, the possession percentage. V Sharma has been playing really safe. He's been making those passes really nice, and he's going for that build up. He's not making those panic passes. He's not going for those long through passes. Nothing like that of has been visible right now. Also, look at that. He's constantly passing the ball. Little Kitaka being played, but I think CJ has understood. Now he's realized what he's got to do. He just has to wait for that pass where he can make that tackle and take the ball away, which I guess he's been conditioned right now. At this point, V Sharma needs to try something else, something new, something out of the box that CJ might not be expecting. Otherwise, at this point where CJ is, he will take over this game. Yeah. Oh. एक बार फिर से सीजे देखिए इधर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पूरे विंग्स को, एंड उसके थ्रू कोशिश यही हो रहा है उनके तरफ से कि वो इधर और भी जगह बना पाए. इस बार पास तो काफी अच्छा था, फर्स्ट टाइम पास करने की कोशिश था, लेकिन उस जगह पे हकीमी थोड़ा इधर अंदर की तरफ मौजूद, और भी मिडफील्ड पे जाके बॉल इधर गवाते हुए दिखेंगे वी शर्मा. और चरणजोत की अगर बात किया जाए, जिस तरीके से उनका गेम अभी तक रहा है, पोजीशनिंग में भी उतना खास था नहीं पहले हाफ पे, बट जाते जाते गोल स्कोर करके जरूर गए थे. एक मौका बना रहे थे, एक शॉट लेने की कोशिश था, लेकिन उसी के बीच में बेलिंगम ने काफी शानदार एक इंटरसेप्शन दिखाया. सो मिडफील्ड फाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली चलता हुआ सेकंड हाफ के ऊपर. फर्स्ट हाफ पे उतना था नहीं मिडफील्ड के ऊपर प्रेजेंस, बट इस बार मिडफील्ड पे ही. लेकिन अगर बात करें चरणजोत की भी, वो भी मिडफील्ड पे बॉल जीत रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इधर एफसी गोवा, वो भी मिडफील्ड के ऊपर ही बॉल जीतते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं. सो काफी ज्यादा अभी धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग बन रहा है, एंड लग रहा है कि शायद जो एक गोल इधर से स्कोर कर देंगे वो शायद इस पूरे मैच को लेके जा सकते हैं. Yeah, this is something that we had kind of speculated, right? This matchup is going to be pretty tight. Not a high goal scoring affair, but yeah, just that one goal could make all the difference. And we've seen another thing that V Sharma hasn't been exploiting his wings. Rather, he's been going a lot box to box, right? He's been constantly just chaining the passes, recycling the balls, and getting the job done. But for CJ, he spread out a little bit, utilizes his wings properly. But one good thing, both the clubs have been really strong in their defense. But who breaks it for the second time? That's the big question. Who gets to score the winner and takes away all the spoils of this war? It's just not a matchup. When it is V Sharma and CJ exchanging just blows and blows against each other, defending and guarding. And now you could see a little bit of an impatience being exercised by CJ, and V Sharma quick on capitalizing on the ball. Just steals it away and starts building his own play. He's got a little bit of a room on that left wing. He's trying to even call out for a pass, but there you can see things are getting really hot and intensified. And at this point, yes, a pause was necessary. Now the extra subs are going to come in, few changes in the tactics, and it's just going to be interesting. Both these clubs, what do they go for? More attacking approach or more of a defensive approach? Because neither of them can afford to concede a goal, but CJ's got a chance, and now he will green time that shot. But how has V Sharma managed to save that one? वी शर्मा बहुत लकी रहे इस बार, नहीं तो ये गोल को रोक पाना एक इम्पॉसिबल के आसपास था, जो कि अभी पॉसिबल ऑलरेडी हो चुका है. क्या मैच जा रहा है ये, जितना टाइम बढ़ता जा रहा है, इंटेंस भी उसी के साथ साथ उतना ही बढ़ता जा रहा है. एंड आई थिंक जितने भी ऑडियंस देख रहे होंगे, वो चाहे बैंगलोर के हो या फिर एफसी गोवा के, या फिर इंडिविजुअली चरणजोत के फैंस हो, या फिर वी शर्मा के, सबके सब बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे, बट बहुत ज्यादा टेंशन में भी होंगे. चरणजोत, आपने सही कहा था, ये प्लेयर जब भी आता है ये सिर्फ वंडर्स करके जाते हैं, और ये शायद पहला इतना ग्लोरियस
फिनिश शॉट था जो कि हम लोगों ने देखा ये एसएल सीजन 2 के अंदर, और विथ रोनाल्डिनियो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. You know, I want to see it again. I mean, a humble request to the production, if they can hear me out, please, just to highlight once more. You know, you could see that over on a loop and still not be tired, and it was needed. You know, somebody had to do something out of the box to score that one. And CJ, this is why he's called the magician, right? Scores goals like this will kind of completely mesmerize you, and at such a crucial point, crucial junction where we were searching for the winner, and seems like CJ might have gotten it. And at this point, he's got accessibility to go full on defense. And V Sharma, what changes does he make? Because Bengaluru FC, TT, they have almost done it with just barely 15 minutes remaining. If somebody could make a comeback, that has to be V Sharma. But the old antics are not going to work out anymore against CJ. He's got to pull off something miraculous, something different. Maybe needs to start utilizing his wings again, because the box-to-box approach hasn't been working out. But a foul. Oh, देखिए वी शर्मा को बाय एनी हाउ इधर से कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, और इधर कहीं ना कहीं मुश्किल में भी दिख रहे थे. बीच में मौका, अभी भी मौका है. बॉल कंट्रोल एम्बापे के पास टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो. Wow! यस, विद दैट गोल इक्वलाइज भी हो चुका है, और मैच एक बार फिर से इंटरेस्टिंग बन चुका है. क्या गेम जा रहा है ये. एफसी गोवा, बेंगलुरु एफसी, वी शर्मा, चरणजोत. आई थिंक यही वो गेम है जिसके लिए सबको अपने हार्ट के लिए जो पिल्स हैं वो लेके आ जाना चाहिए, नहीं तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है. Oh goodness. I mean, if we could have one of the rules being broken, if we could go to extra time, I'd love to see that, but that won't happen. I mean, they Yeah. won't be benevolent. Other players will be like, no, this is unfair. What are you doing? But yes, this is why we love eISL, because of players like these two, right? CJ and Vanchaj. And Vanchaj, under extreme duress, he never gives up and always had that one trick up his sleeve. And we could see that little mistake made by CJ there, giving him that little bit of a space, cuts left and then takes a shot. Both the Ronaldinhos doing wonders for the club, for their particular clubs. And now, when Charanjot went for a 5-4-1, suddenly he concedes one. And at this point, he's got to score one more. And with Mbappe just rushing in through, but V Sharma says no, not letting you go this time, not letting you pass. And with just 6 minutes remaining, only a max of 2 attacks is what we can get to see. And now you can see, Charanjot has gone on PAPL. And you could see him just compete for the ball. That means he cannot, V Sharma needs to constantly keep the passing game up. And he's got a little bit of chance, but decides to go for a back pass towards Mbappe. The ball had been passed, but stolen away yet again by Jude Bellingham. But no, V Sharma giving the ball away again, receiving it back. Quick flurry of passes, little bit of a room there, but no. PAPL बहुत कुछ सही भी होता है, और उसका एक गलत साइड भी है कि आपके जो डिफेंस है उस पर गैप बन जाते हैं कभी कभार, और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर तो सकते थे, बट आखिरी 10 सेकंड्स एंड उसी के साथ ये मैच होता हुआ समाप्त. ये मैच मुझे फिर से देखना है. आई डोंट नो, लाइक जिस तरीके से ये गेम खत्म हुआ, पैसा वसूल मैच. हालांकि किसी ने पैसा दिया नहीं था देखने के लिए, बट यस, दिस इज व्हाट इट इज. क्या शानदार था. पहले चरणजोत पिछड़ गए, ये पहले बेहतरीन गोल की वजह से. ये पास क्या था, लाइक एकदम कहने की गर्म छुरी निकलता हुआ बटर के ऊपर से, कुछ उस तरीके का पास था, एकदम प्रॉपर स्मूथ, और उसके बाद फिनिश. एंड फिर चरणजोत के 2 गोल, देन कम बैक फिर से हम लोग को वंशज शर्मा की तरफ से देखने के लिए मिला. फिक्सर्स, Yes, this goal was beautiful, fine. But the next
The next one is something I want to see. I mean, Takimi. Yeah. He scored one, but this one, the next one, that follows, right? The next one is just show it to us. Okay, we're going for the replay. This one. Look at that, a little bit of a ball roll scoop from that room in time, and it goes. And you know, V Sharma, the moment the ball was released, he knew. He had already, given up. He's went down to CJ's mercy there, and but then when we were thinking that it's all done and dusted, V Sharma scores this one. You could see that little bit of a room for Ronaldinho built up over there. Was very patient with that build-up, stole the ball away with Mbappe. Look at that. Nobody was marking him, and the moment he got on to Lucio, I think he had gotten past through him. And yes, you don't have to pay for anything, but yes, a sub to the channel will be very much appreciated. Like the stream, because that's what gonna motivate us, because now we're almost just knocking at the playoffs, and that is where the real masala lies. But these are the matches, like I said, folks, this is what gets your heart beating. And yes, I hope you had your pills, because coming up next is going to be a co-op matchup, and I said co-op is going to play such a crucial role, because deep down under, I was feeling that there's going to be a draw. Nothing really separating these two amazing players. And this co-op, where FC Goa have been one of the strongest clubs. And today, even Shagnik, he's going to be tested, because majority of the times, what we have seen so far, Bengaluru FC, CJ gives them the win. Then they go on to win their co-op. And then, Shagnik is like, he's just strolling around the park. He's doing any kind of shenanigans that he's up to, and he gets to try. And in doing so, I think Shagnik has developed one other thing, is that he's so much calm under pressure right now. In the final third, you've seen him on multiple occasions. Because I've seen this player in season 1 and season 2. Season 2, he's making those beautiful skill moves and getting that little bit of a gap opened up, and then shooting, right? So that could really come into play. But Adizima, like you said, he's Dronacharya, he's Arjun and Eklavya. So that's going to be one of those matchups to see. Let's see who comes out. But for co-op, TT, any predictions? Do you think FC Goa can win, or is it going to be Bengaluru FC, or is it going to be a draw? आई थिंक इधर विथ आदिजीमा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा चांस है एफसी गोवा के, क्योंकि आदिजीमा जिस तरीके के बॉल इधर बना के देते हैं, वैसा बॉल शायद और कोई बना के नहीं दे सकता इस पूरे एंटायर eISL के अंदर, अगर हम लोग सिर्फ प्ले मेकिंग की बारे में बात करें। और उस जगह पे अगर फिनिशिंग की बात करें तो ऑब्वियसली उनके पास वंशिक शर्मा है, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग को चरणजोत भी देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर इधर देखा जाए शाग्निक की, तो शाग्निक में भी उतना ज्यादा लॉब थ्रू बॉल्स या फिर कुछ मैजिकल जो पासेस है वो नहीं निकालते हो आदिजीमा जैसे, लेकिन उनका जो मिडफील्ड स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो मिडफील्ड से नीचे बॉल वो उतना ज्यादा अलाउ नहीं करने वाले हैं इस कोऑप के ऊपर। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे तो लगता है कि ज्यादातर लॉब बॉल से जाता हुआ दिखेगा एफसी गोवा की तरफ से। अगर गोल हुआ उसमें दैट्स ओके, बट अगर नहीं होता है देन इधर चांस बहुत सारा है बेंगलुरु एफसी की तरफ से। आई मीन चलिए जनाब, आपने तो एनालिसिस दे दी है, बट इस पॉइंट पे जस्ट टेल मी हु इज गोना विन। आई थिंक इट्स टू टफ, बट मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद ये ड्रॉ के साथ खत्म हो सकता है। ये बहुत ज्यादा टफ है देखिए इधर प्रेडिक्ट करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरफ ये गेम जा सकता है, और स्पेशली इधर डिपेंड करेगा कि कौन अपने नर्व्स को जो है वो एकदम प्रॉपर कंट्रोल में रख पाएंगे। क्योंकि अभी जो है वो लड़ाई है वो ऐसा नहीं है कि लाइक हम लोगों को क्वालिफाई करना है, वो कर चुके हैं काइंड ऑफ टॉप 6 पे अपना जगह बना चुके हैं। अभी लड़ाई इसका है कि कौन रूल करने वाले हैं इस पूरे टूर्नामेंट के ये पूरे पॉइंट्स टेबल के ऊपर। हो सकता है टॉप में नहीं बट अनबीटेबल होके, तो उसका लड़ाई अभी चलता हुआ दिख रहा है। Well, I mean, to be honest, at this point, we know both these clubs haven't taken an L. Nobody has gotten that loss on them. So, at this point, it's so difficult to kind of decide or predict who's going to win and who's not, right? But, anything can possibly happen. Like you said, right? They have to be very watchful for those long balls coming in from Adizima's side, where he's going to feed Vanshaj, and we know what Vanshaj does. But I think knowing CJ and Shagnik,
especially Shagnik in the real world. Shagnik has learned a lot from Adizima. So at the same time, he must be also knowing what his master is gonna be doing, what his coach is gonna be doing. So if they have come with some preparation, then that would really come into. जी हाँ, क्योंकि जो प्रैक्टिस भी होता है उनका तो वो तो आधी सीमा के साथ ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। सो जिस जगह पे आधी सीमा के पास थोड़े बहुत एडवांटेजेस हैं, उस जगह पे मुझे लगता है कि आधी सीमा का भी जो गेम है वो भी समझने में बहुत सारा मौका इधर मिल चुका होगा अभी तक, और वो सारे मौके को अगर वो अभी इधर इम्प्लीमेंट करते गए तो मे बी इधर शाग्निक की तरफ से भी वो हम लोगों को अलग सा वो होता है ना कि अगर हम लोग ओरिजिनल फुटबॉल की बात करें और उधर जाके जैसे एक टाइम पे पेप थे, उसके बाद अभी शावी खेल रहे, शावी अभी बन चुके हैं मैनेजर, तो कुछ उस तरीके का है। एक साथ जब भिड़ेंगे तब तो कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग माइंड है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, तो हो सकता है वैसा कुछ हम लोग को आज देखने के लिए मिले। Yeah, I mean, I just hope we get to see some amazing goals, like even in the co-op game. But you know what, folks? Today was one of those days where we saw some mesmerizing, some sort of goals that kind of absolutely blew your mind. So let's take a quick look at the super goals of the day. वाओ, Oh, I mean, to be honest, those two goals. I think nothing really beats the other. To be honest, right? Because if you've seen right the first goal that Vagia scored there, that was amazing. When we thought that we had enough, then the second one from CJ. But folks, finally we're on with the co-op matchup. It's CJ Shagnik from left to right with their blue, and look at that, just going in, trying to get the goal, and well, did not happen, as FC Goa has managed to easily fend it off. या देखिए, शुरुआत से मुझे लग नहीं रहा कि इस पे बहुत ज़्यादा अटैकिंग गेम होगा, थोड़ा स्लो डाउन करके खेलना चाहेंगे, प्रॉपरली बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, देन जाके जब वो पूरा समझ लेंगे कि या इधर से एक गोल हो सकता है, देन जाके वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर पे गोल आ सकता है बेंगलुरु एफसी की तरफ से, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग बहुत बार देखे हैं बेंगलुरु एफसी को काउंटर पे खेलते हुए, लेकिन प्रॉपर बॉल कंट्रोल अभी के लिए देखने के लिए मिलता हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ एफसी गोवा। बीच से रोनाल्डो, बट लूसियो अकेले, रोडुलित, अभी भी बॉल मौजूद एम्बापे के पास, एंड एम्बापे जस्ट टू रोइट के स्टेप ओवर एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट नेट पे इधर फिनिश करते हुए, व्हाट अ गोल। एंड एफसी गोवा दिख रहा है एफसी गोवा फिर से दिख रहा है, बट आई थिंक अभी बहुत कुछ बाकी है फिक्सेस। आई थिंक जितना हम लोग देखते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि गेम में होगा क्या। Yeah, I mean, this is what you would expect, right? When it's FC Goa against you in a co-op, those beautiful set passes given, and then just look at that. Look at how Ronaldinho just breaks through, and oh my goodness, the second one also comes, a little bit of a ball roll there, and just stops the ball over and goes for a goal. And Bengaluru FC, look at Sagnik, he's absolutely stunned. And yes, at this point, CJ has to do something about this. oh my god, इधर सिचुएशंस काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हुए, ऑन द अदर हैंड देखिए 2 गोल का फासला ऑलरेडी बन चुका है, और क्या इधर से क्या कर पाएंगे बेंगलुरु एफसी। एक बार फिर से बॉल निकालते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बापे, बट ए क्रॉस, ओ माय, बॉल अभी भी है उनके पास। एफसी गोवा इधर से एक गोल कर सकते हैं और वो करेंगे भी।
3-0 शुरुआती 20 मिनट के अंदर एफसी गोवा जस्ट डिमोलिश कर दिया है बेंगलुरु एफसी को इस गेम के शुरुआत से, और इधर से कम बैक करना बेंगलुरु एफसी के लिए बहुत ज्यादा टफ है। Oh my goodness. I don't know where do they go from here, because at this point it might look lights out, because this could be the fourth. Oh, it's the crossbar. Bengaluru FC are just being toyed with right now at this moment. It's just 24 minutes into the game, and FC Goa are hell-bent on crushing them apart. But a nice shot being taken. It's the crossbar again. What's going on? We need a pause. I need to catch my breath. आज सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। वर्ल्ड पे 7 वंडर्स है एंड शायद 8th आज इस गेम के बाद बन जाएगा। जिस तरीके के सिचुएशंस इधर चल रहे हैं वो इसके पहले कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा था ऐसा कुछ, और अभी भी कहीं ना कहीं जो है देखने के लिए मिल भी नहीं रहा है। 3-0 के साथ एफसी गोवा, बट अभी भी चांस है। ओ इधर एक और मौका बन सकता था, हालांकि इस बार एडरसन को चेंज नहीं किया गया है। क्या ये एडरसन की वजह से हो रहा है? देखिए, जोक्स अपार्ट, परफॉर्मेंस एफसी गोवा का काफी अच्छा था, बट हाँ, एडरसन को चेंज नहीं किया गया। यूजुअली कर लेते हैं हर बार। Yeah, I mean, I think the only reason, like the girl had mentioned last time, was to protect those driven shots, right? And we know how OP they are, as this could be one more in the making. And there you go. At this point, at this moment, I think they have just put them 6 feet under. 4 goals already scored in mere 35 minutes. FC Goa, I think someone has poked the bear, and the bear is out for blood. And for Bengaluru FC, they've been desperate in trying to create chances. I mean, with KDB, almost did that there, but still hit the crossbar. And I'm pretty sure CJ and Shagnik both must be furious regarding it. But we thought this could be an absolute thriller, but seems like FC Goa, no stones unturned, and want to absolutely just hit the nail, hurt them where it hits, just pinch their wounds and absolutely demolish them. They're on a warpath, folks, as another goal could be in the making. And look at how seamlessly they're just coordinating with each other. It does not even feel like two players are playing, and that is very difficult to achieve in such a short span of time. वो शुरुआती में जो ब्लो दिया गया है इधर, उसके बाद इससे वापसी कर पाना तो बहुत ज़्यादा टफ है। बट टुवर्ड्स चरणजोत, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को एम्बापे के ऊपर चरणजोत ही देखने के लिए मिल रहे हैं। राइट हैंड साइड से निकलने की कोशिश था, बट नहीं, इधर वर्जिल वैन डाइक अलाउ नहीं करेंगे। सो उसी के साथ फर्स्ट हाफ हुआ ख़त्म। हालांकि रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा टिल्ट हो चुके हैं एफसी गोवा की तरफ, और बेंगलुरु एफसी मझधार पे फंस चुके हैं, लेकिन अभी भी 45 मिनट्स बाकी है। एंड देखिए, कोऑप के ऊपर एफसी गोवा एकदम शुरुआती से अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे ही, और उनका जो स्ट्रांग परफॉर्मेंस है वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। सो या, जैसे कि आपने कहा था कि लास्ट मैच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सागनिक के ऊपर, क्योंकि इधर से कम बैक करना आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ है। 4 गोल्स करना इधर से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है। Yeah, I think at this matchup, what we saw was just absolutely, two players kind of just playing some amazing FIFA there. I mean, so well coordinated, such beautiful synchronizations, and this is what we were kind of worried about. How is Bengaluru FC going to deal with that? And co-op has been one of FC Goa's strongest suits. Even in the previous season of eISL,
even when Vanchaj and Arafnan, dear little Afnan were playing, they also were really good. But with Adizima coming in, it feels like it's the final part of the jigsaw. And for Bengaluru FC to come back from a 4-0 deficit, nothing short of a miracle can do that over here. And they have to start off with scoring goals. And seems like, FC Goa have never really given them the tempo, never really given them that moment where you could say that yes, Bengaluru FC have been finally looking in control, are kind of getting the ball passed in the right areas, are keeping the midfield dominated. That's not happening, because look at those. You could see the players just rethinking their decisions, and one after the other, they're just losing the ball. And never really thought it would be a 4-0 first half. Even a 2-0 would have been something acceptable, something that you can make a comeback from. At this point, Bengaluru FC have no room for errors. As pass on towards Eusebio with R9, goes for a shot, but wasn't really green timed. As a result, also went through a deflection there, and Van der Sar having no trouble in saving that one. 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है क्लॉक पे। गोल्स अभी तक एक भी नहीं आया बेंगलुरु एफसी की तरफ से, लेकिन शायद एफसी गोवा की तरफ से एक और आ जाए। बट एडरसन मॉरिस गिरते पड़ते सेव जरूर किए, नहीं तो शायद 5th गोल भी आता हुआ दिख सकता था। हालांकि खतरा टला नहीं है, विद कॉर्नर मौके बन सकते हैं। क्रॉस किया जाएगा हेडर के लिए, जंप जरूर किए एम्बापे, अभी भी वर्जिल वैन डाइक मौजूद, लेकिन सही टाइम पे इंटरसेप्शन एंड बॉल इस बार छीना जाएगा बेंगलुरु एफसी की तरफ से। सो बेंगलुरु एफसी, उनके पास तो अभी देखिए ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, एक ही ऑप्शन है, गोल करो। क्योंकि अगर गोल नहीं करेंगे देन इधर से ये मैच तो हाथ से निकल जाएगा। एंड उसके बाद आदिजिमा वर्सेस सागनिक, आई थिंक बेंगलुरु एफसी के लिए बहुत टफ हो सकता है। बट फाइनली एक मौका, ये भी गोल में कैसे नहीं रख पाए, पूरा खाली एरिया था। ये रखना चाहिए था एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट। I mean, the pressure is such, but this could be a goal. This has to be a goal. Ronaldinho has a lot of pace because he moved the keeper, and there you go. Finally, Bengaluru FC salvaging one from FC Goa, but the task is too enormous right now. Still 63 minutes in, and the 3-goal deficit. Bengaluru FC will go for a pause and make some massive changes. Something in the formation, bring fresh legs up, get Erling Haaland in, because you would need him right now at this point. And we know Erling Haaland, sort of changes that he can make, right? Some impossible goals coming through, just presses in like a bull. And at this point, Bengaluru FC trying to build another chance, but no, says FC Goa. Still the ball remains on them, back and forth passing, a little bit better FIFA being played by Bengaluru FC rather, but no, FC Goa always one step ahead. Yeah, Bengaluru FC फाइनली बॉल कंट्रोल उनके पास था कुछ देर के लिए, लेकिन एक बार फिर से इन आ गया। इस बार तो दौड़ने वाले हैं, स्प्रिंट दिखाने वाले हैं एम्बापे अपने, बट उनके साथ है लूशियो पहले तो बहुत स्ट्रांग थी, बट उसी के साथ जो ये हीरो टाइटन कार्ड्स आए हैं वो उसके बाद तो फिर पेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जा चुका है। तो अभी चेस करते हुए देखने के लिए मिलेंगे भी, और सिर्फ चेस ही नहीं, वो बॉल डिफेंड भी करेंगे। मौका बहुत कम है, एक ही गोल हुआ है, 3 गोल अभी भी करने हैं। बेंगलुरु एफसी बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बट आदिजिमा एंड एफसी गोवा यही चाहेंगे, थोड़ा स्लो डाउन करो, बॉल अपने पास रखो, पास खिलाओ, डिफेंस को खोलो, जो कि खोला भी गया है। देखिए इधर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इधर टूट चुका था बीच में कुछ टाइम के लिए, और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि लो ब्लॉक पे चले गए थे कुछ देर के लिए बेंगलुरु एफसी, तो उसको तोड़ने के लिए एकदम पीछे लेके आए बॉल को, फिर से रिस्टार्ट किया अटैक बनाना। इस बार एक मौका है, बीच में जगह भी है, लेकिन लूशियो उधर मौजूद है। Look at Bengaluru FC, that paused from around like 6 minutes, right? And still haven't gotten a chance. The ball hasn't gone out of play, and FC Goa are like, yeah, we are fine with this. Go on.
Because now Oh at this point with just merely 10 minutes remaining and no, Mbappe making a run like this, but such no! a crucial tackle. Oh, Oh. तो all right. ये एक्सपेक्टेड नहीं था Yeah, this wasn't इधर. expected. Yeah. यस एंड आई थिंक इधर जितने भी ऑडियंस देख रहे थे वो अगर आसपास रहते तो शायद अभी वो हम लोग को फुटबॉल फेंक के मार रहे होते कि इतना शानदार गेम इधर चल रहा है, वाई दादा वाई. बट देखिए कुछ कुछ चीजें जो है वो हमारे हाथों पे भी नहीं रहता, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते. लेकिन मैच बहुत शानदार जा रहा था, अभी इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं. बहुत शानदार जा रहा था. रिजल्ट आप लोगों को जरूर बताया जाएगा. बट यस, ये कुछ मैचेस है ना जो कि पूरे सीजन में शायद एक बार या दो बार ही आते हैं, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पूरा देखें, बट वो मन भर नहीं रहा. But कहीं ना कहीं एक अंदेशा तो आ चुका था कि FC Goa they're gonna win this one because Yes. to be honest, TT, from just getting past a 3-goal deficit with merely 10 minutes remaining. Now at this point, at this impasse, what would have Bengaluru FC done, right? Go full out on an attack, just go for a 3-4-3, get as many players ahead and try and dominate, or but in 10 minutes, I don't think a club like FC Goa will concede 3 goals. We have seen this happen even in the past with different clubs. But when it comes down to them, I think the first half they were kind of struck by lightning. I mean, Bengaluru FC had no clue how have FC Goa gotten so better in their co-op matchup, because it kind of felt like it was just a single player playing, right? Every single thing was so well orchestrated, right? Yes. Every pass, just in the right place, to the right area, to the right player, and even those skill moves also, they were just getting outplayed. And Bengaluru FC's defense was just all over the place. What could he have possibly done there? And after conceding like 4 goals, yeah, Bengaluru FC managed to grab one through, but you could see that they had to literally work tooth and nail for that, and they did get. There were a few chances created. One hit the crossbar. The same happened to FC Goa also. A couple of moments earlier in that game. So one thing for certain, no matter what the result is, Bengaluru FC, even if they score 2-3 goals, then it's fine. But from what I can assume from here is that the co-op game is FC Goa's. Now, with that being said, FC Goa, they're gonna maintain their undefeated run over here. Nothing's gonna change that. They've secured that 1 point, regardless if Shagnik defeats Adisima. And considering the form that Adisima is, he's very less likely to lose, because Shagnik, to be honest, I'll be blunt over here, hasn't really been truly tested, right? There was that one occasion against Varsi where Varsi went on to beat him, and that is where he got his super class there. But there you can see, no real changes there. It is a 4-1 score line, and now for Bengaluru FC, they are on the cusps of finally getting that 1L, which they haven't managed throughout, right? So at this point, a victory for Shagnik will ensure that FC Goa and Bengaluru FC will be sharing points on board. And for Adisima, is all he's got to do is get a draw, and or a victory is even better. That would secure them those 3 points. Even if they lose from here on, FC Goa, it's still going to be counted as a draw, which still hasn't happened for FC Goa yet. So that is one over there. But yes, the FC Goa's unbeatable streak is still unbeatable, and if Bengaluru FC could not break it, I don't see any other club going on to do that. The golden run वो इधर है एफसी गोवा का. अभी तक चल रहा था, 7 मैचेस थे, बट एक बार के लिए हम लोगों को लग भी रहा था कि यस, बैंगलोर एफसी के साथ जब भिड़ेंगे तब शायद जो ये पूरा इक्वेशंस है वो अलग हो सकते हैं. लेकिन नहीं, वो भी नहीं कर पाए बैंगलोर एफसी, वो भी इधर नहीं हरा पाए एफसी गोवा को. इसीलिए क्योंकि इधर से अगर नेक्स्ट जो मैचअप है वो हार भी जाते हैं, फिर भी ऐसा ड्रॉ काउंट होगा, नॉट लूज. सो कहीं ना कहीं बहुत बहुत कुछ इधर ऑनलाइन है. बट इधर चांस है एफसी गोवा के पास
कि वो सिर्फ अकेला टीम बने जो कि पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन रहे, क्योंकि उनके पास मौका है कि अगर वो हराते हैं तो 3 पॉइंट वो लेके जाएंगे, वो अनबीटन भी रहेंगे और उसके साथ साथ जो टॉप प्लेस है उसको एकदम होता है ना कि अभी तक तो एकदम टॉप पे बने रहे थे और इनको रोकने के लिए कोई था नहीं, लेकिन इसके बाद वो कंक्रीट के साथ लिख देंगे अपना नाम कि टॉप पे तो हम ही हैं, हम रहने भी वाले हैं आखिर तक। Yeah, this was again one of those conversations that we had, if you remember, with Duggal, right? Asking, who goes on to stop FC Goa. And he was like, Fixes, what's going to happen is in the playoff, somebody's going to do that. It's going to be the Saranch's club or maybe CJ. So today, with the way, what happened, B Sharma and CJ, that was pretty close. But what went on in the co-op, that was something that I think Bengaluru FC would want to forget soon, and especially Shaknik, because Adizima. Oh. Look at that beautiful set passing between the players and a chop taken. But Van der Sar prepared, and you could see how quickly he went for the player lock, instantly went for the pass. And how do you deal against a monster like Adizima, who can do such things and with such ease? I think शाग्निक को आज बहुत ज़्यादा कुछ अलग करके दिखाना होगा। उनका नेचुरल जो गेम वो खेलते हैं उससे हटके कुछ करना होगा, क्योंकि नॉर्मल गेम से आधी सीमा को तो रोकना पॉसिबल होने वाला है नहीं। रोडोलीत देखिए मिडफील्ड पे दूर दूर तक प्लेयर्स नहीं दिख रहे शाग्निक के, बट फाइनली इधर बेलिंगम थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे। बॉल पोजीशन अभी भी बेंगलुरु एफसी के पास। एम्बापे ओ एक और टच अगर वैन डाइक को पीछे छोड़ सकते थे तो शायद इधर गोल हो जाता। वाओ, रोनाल्डिनियो, बट वैन डे सार अपना काम पूरा बखूबी निभाते हुए। Yeah, beautiful step over, just going through. Adizima was jolted for a moment, but yeah, the keeper saves the day over there. Would have been a beautiful start for Bengaluru FC. Nonetheless, Shagnik has to be pressing tonight. He has to be, dominating the flow of the game, has to fight for the ball. You can't just let Adizima, keep dancing through, because if he does that, he's going to punish you. You cannot let him have that room and space. And you can see how he's just chaining those passes with Mbappe, finds that space, goes for the shot. Oh my goodness, how on earth did Van der Sar save that one? आई थिंक इस गेम पे वैन डे सार भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देखें जब एक तरफ से वैन डे सार चलते हैं देन अदर साइड वैन डे सार भी इन्फॉर्म आ जाता है, तो दोनों ही साइड से गोल कीपिंग तो भाई टॉप नॉच रहने वाला है। तो गोल स्कोर कौन करने वाला है, जो इधर कुछ मैजिक करके दिखाएंगे वो, और मैजिक हम लोग को यूजुअली ज़्यादातर टाइम आता हुआ दिखता है जिमा की तरफ से, लेकिन बॉल कंट्रोल और अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहा था शाग्निक की तरफ से, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। वो आखिरी टच जो सेकंड बॉल है वो इधर कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से मुश्किलें नहीं बना पाए अभी तक एफसी गोवा के ऊपर, क्योंकि एफसी गोवा तो ऑलरेडी 1-0 करके बैठे हैं, उनको कोई टेंशन है भी नहीं और वो बीट भी नहीं होने वाले। सो वो तो अभी एकदम ध्यान से नॉर्मली खेलेंगे। अगर ये ड्रॉ पे भी ख़त्म होता है देन फिर भी एफसी गोवा के पास ही जाने वाला है वो 3 पॉइंट्स। सो बहुत कुछ इधर ऑन स्टैक्स है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टच वैन डाइक की तरफ से और थियो हर्नांडेज देन उसके बाद उसको क्लियर भी किया। Yeah, I mean, these are the German crosses that you should be anticipating, and Adizima has kind of mastered the art of it. And right now with Mbappe trying to build a little bit of a room and space, but nice defending. Usually a lot of players I've seen, they just let the ball come in a little bit close, but Adizima charged for the tackle in that one and stole it away. Did not want to give that space for him to breathe. And again, he's controlling possession. And by all means, I mean, what do you do if you're Shagnik at this point, right? He's trying to contest for the ball. That's not happening. And Adizima just, kind of back and forth passes and frustrating Shagnik. And leaving him scratching his head. But nice play lock comes in towards Ronaldinho, building that attack with Ashraf Hakimi. Goes in for a cutback, gets it on towards Ronaldinho. But no, very good defensive plays by Adizima, ensuring that nothing goes by. It's still 30 minutes into the game.
and we haven't seen the deadlock being broken between these two players. That was an offside had he received it. Yeah. बट एक चीज तो हम लोगों को दिख रहा है कि शाग्निक बार बार इधर राइट विंग को एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, राइट विंग से अटैक बनाते जा रहे हैं, जिसका फायदा कुछ हुआ नहीं है. तो या उन्होंने सही काम किया अभी जस्ट कि वो अपने विंग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अटैक तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं हो रहा, विंग से वो कोशिश भी पूरा किया जा रहा है, लेकिन एक साइड से करने से नहीं होगा, वो डबल साइडेड प्रेशर बनाने की जरूरत है. एंड आई थिंक वो अभी शाग्निक की तरफ से देखने के लिए मिल भी सकता है. बट उसी के बीच में अगर जरा अटैकिंग पोजिशन पे जाएंगे तो आदि जिमा बहुत जल्दी काउंटर में भी आते हैं, तो उसको भी रोकना होगा. बट बात कर ही रहे थे, फाइनली एक मौका एकदम बैकलाइन से ऊपर से बॉल को खींच के लेके आए टुवर्ड्स एम्बाप्पे एंड फिनिश. दिस इज आदि जिमा, जिस आदि जिमा को हम जानते हैं शाग्निक के पूरे 35 मिनट के मेहनत को जस्ट 1 मिनट पे तोड़ के रख दिया और उसी के साथ लीड लेके गए एफसी गोवा के लिए. Such was the beauty of that goal. You know, this was coming right and had to happen when Adi Zima constantly just controlling the tempo of this game, just keeping on passing between the players, making this goal look so easy. I have tried to replicate cutbacks. It's so difficult. Even then, I modified, went for a few ball rolls. Then things started to look in order. But it's the timing, right? Because the moment you start pressing R2, you kind of take that extra little burst of pace. So more often, it kind of goes out of play. But again, a beautiful chance for Adi Zima. An open pass towards Lionel Messi, and he makes no mistake. And FC Goa, just like that, 2 quick goals. And Shagnik, I think he's broken at this point. Broken, battered to the point where Adi Zima is going to instill a lot of hurt. And he's got nowhere to run and hide. Just face the wrath of Adi Zima. You could see, after conceding that first goal, especially when it's such a tight game, and you've been doing all you can to defend, but Shagnik looks on stealing one back. Indeed, he does. Indeed, he did it in that moment. And just before we come to the end of the first half, Bengaluru FC still keeping the hopes alive to try and steal a draw into this fixture, with Shagnik scoring a beautiful one. But Adi Zima, he cannot go loose. Because if he does that, Shagnik, we know he's a player who's got everything in his arsenal, could go on to punish Adi Zima. Yeah. एक और मौका, एक और टाइम, क्या आदि जिमा एक और गोल कर पाएंगे? यस, कट इन, हुलीत, बॉल कंट्रोल एंड पेनल्टी. आखिरी मिनट पे पेनल्टी. नो वे. सही साइड पे जंप भी किए थे, बट रोनाल्डो के शॉट को रोकना, और वो भी अगर वो ट्रॉफी टाइटन्स के रोनाल्डो हो जिनका रेटिंग 97 हो चुका है, वो तो इम्पॉसिबल सा है. 3-1 जो बीच में मौका बन रहा था शाग्निक की तरफ से कमबैक की, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो गया हमारे ये पहले हाफ के विसल के साथ. Yeah, I mean, anything and everything that could go wrong for Bengaluru FC has happened. And one of those major reasons is letting Adi Zima control the ball like that on the midfield, right? We haven't, I guess, maybe Shagnik could have thought for just trying or applying constant pressure right from the start. Not let him get away with it. You have to play a risk, you have to play a little bit of a risky FIFA against Adi Zima. You just can't let you just can't go with the normal ideal meta strats against him. We know he's gonna counter you. We know he's just one step ahead. And every single day, Adi Zima has been improving. And what we witnessed in the co-op, that was on a whole different league altogether. And when it comes down to individual prowess, Adi Zima, for now, one step ahead of Bengaluru FC. Shagnik, he's got to really dive deep into his playbooks, because every single thing that Shagnik has learned and done right now, Adi Zima knows it all. He's analyzed it all, and this is what he's famous for. But a run a little too early, and it goes out for an offside. Yeah. And
अभी सेकेंड हाफ शुरू जरूर हो चुका है, लेकिन 3 गोल्स दागने होंगे, और वो 3 गोल्स क्या आएगा? यस, पहला तो आ चुका है रूडोलित के साथ। एक बेहतरीन स्टेप ओवर, आगे गए और उसी फ्लो पे फिनिश भी किए। लाजवाब परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला इधर कहने के सागनी की तरफ से। होप्स अभी भी बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, शायद इधर एक कमबैक भी दिख सकता है, बट आधी सीमा उनको गलती नहीं करना है। देखिए थियो हर्नांडेज बॉल जीत चुके हैं, लेकिन फिर से बॉल खो भी चुके हैं। Yeah. Oh, now this is good. This is something that Shagnik has done better. He's just trying to steal the ball in the midfield, take the possession, but needs to retain a little bit more longer. But a good job by Shagnik getting one more goal back. It's 3-2 the scoreline. One more and then we've got a game on our hands as what? No way. No way. Is that a pen? Ah. And Adizima says, thank you, sir. Thank you. 2 pens in a game. How often do you see that, TT? And just like that, every single time you see Bengaluru FC staging a comeback, they give away a pen. And kind of really hurts, right? You did not anticipate that to be a pen there, but fine. The AI making the decision over there. But now, this is kind of heart-wrenching for Shagnik. No matter what he does, he concedes a goal right after. And then Adizima kind of has that the 2-goal lead. And he now has to score 2 goals in a mere 30 minutes remaining into the game. And this could be another one as he takes a shot. Green times it. Makes no mistake. Absolutely clinical. Just whizzes past through the keeper. It's going to be FC Goa building that 3-goal lead against Bengaluru FC. Absolutely, just dominating. And this point, they're getting hammered. They're getting clobbered. What do they do? पेनल्टीज कभी कभार आपके कंट्रोल में नहीं रहते। आप कोशिश करते हो कि आप जाओ डायरेक्टली इंटरसेप्ट करो बॉल को, लेकिन कभी कभार वो बॉल की जगह पे पैर पे कनेक्ट हो जाता है। अगर आपका टाइमिंग सही भी रहे फिर भी, लेकिन ये जो गोल था आखिरी में लाजवाब था। लेकिन आगे एडवांस कराया इधर गोलकीपर को राइट हैंड साइड पे, लाइक गोलकीपर के लेफ्ट हैंड साइड और एम्बापे के राइट हैंड साइड पे खाली जगह मिल गया। बट विनीशियस जूनियर फाइनली इतने दिनों के बाद हम लोग को देखने के लिए मिला है, आखिरी कुछ टाइम के लिए। और इस बार विनी क्या कर पाएंगे? राइट हैंड साइड पे विनी को खिला रहे हैं, लेकिन पास नहीं पहुंचा। फाउल इस बार आता हुआ इसी गोवा की तरफ से, और एक फ्री किक जरूर मिलेगा, लेकिन इतने दूर से डायरेक्ट शॉट तो बिल्कुल नहीं लेने वाले जिनोला। विनी the new foot birthday, Vinicius Junior. I think Vinny has been a card that we were hoping would get a promo, and finally he did. And I was just hoping that players start using him more often, because the kind of a burst of a pace that he has, I think around 99, I'm pretty sure, and could do wonders. Could just run in through and has gotten all the way in. So a lot of fast players over here. With David Ginola will take the shot and it goes in. It goes in. The moment it was on David Ginola, one of my favorite cards, it was bound to go past the keeper. Bengaluru FC still trying whatever they can, but with just 20 minutes remaining, still have to score 3 goals to try and clinch a draw from this fixture. And looks like could be one of those cases with David Ginola passing on towards Kylian Mbappe, but Bellingham present for the defense. Yeah. As of now, विनी देखिए इधर अगर डे ब्रुयना आगे आती तो शायद कुछ बन सकता था मौका, बट वो बना नहीं।
और इधर से आखिरी 15 मिनट पे 3 गोल स्कोर करना, आई थिंक वो भी पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो बट नो बाय द वे, लाइक क्या यही वो दिन है जिधर बेंगलुरु एफसी अपने जो अनबीटन स्ट्रिक थे उसको टूटते हुए दिखेंगे, और ऑन द अदर हैंड एफसी गोवा वो एस्टैब्लिश कर लेंगे उनका अनबीटन स्ट्रिक। क्योंकि इसके बाद जैसे कि आपने कहा था कि अगर बेंगलुरु एफसी नहीं कर पाए देन शायद ही कोई और कर पाएगा। मुझे भी वही लगता है कि शायद ही कोई और क्लब है जो कि भी इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हो। क्योंकि अगर दोनों ही तरफ से अगर बताया जाए कि दोनों ही प्लेयर स्ट्रांग है, तो इनको छोड़ के शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है जो कि दोनों ही साइड से स्ट्रांग है, जिनके साथ ऑलरेडी मैच हो चुका है, जिसपे सरांज को हराया गया था एकदम स्टार्टिंग में चैलेंजर्स की तरफ से, एंड उसके बाद पूरा गेम जो है वो बेंगलुरु एफसी के पास गया। सो लाइक कहने के वो तो गेम देखने के लिए मिला ही मिला था। और उसके बाद एफसी गोवा की भी अगर बात किया जाए, उनके साथ भी हो चुके। सो देखिए मौका जो है वो अभी बनता हुआ दिखेगा, लेकिन आखिरी मोमेंट, आखिरी कुछ मिनट्स और उसके बाद कहने के सिनारियोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखेगा फॉर द साइड ऑफ एफसी गोवा एटलीस्ट, क्योंकि वो इधर अनबीटन स्ट्रिक को पूरा बना के रखने वाले। आखिरी 10 मिनट कम से कम इधर 3 गोल मारने होंगे अगर ड्रॉ करना है सागनिक को। Yeah, and this could be one more. All right. I think he went for a power shot and then suddenly went against it because he could see the defender was right beside him. And you can see that uproar from the viewers out there. Were hoping that it's a pen. But no, that was not the case. FC Goa being saved over here as they go for a counter with Kylian Mbappe. A little bit of a halt there. That's all it's required for Theo Hernandez to make sure that he's in the same tune. And now with Erling Haaland gives the ball away, and finally Cafu comes up. I'm happy. Yeah. काफू आधी सीमा। ओके, सो आखिरी 3 मिनट के लिए बॉल बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे, सो वो नहीं दे रही हैं और उसी के साथ इधर ही मैच ख़त्म हो जाएगा। सागनिक फिर भी दौड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं इस सब टाइम पे एक चीज़ करता हूँ, पहले पॉज दबाता हूँ। वैसे पॉज तो होगा नहीं क्योंकि बॉल देंगे ही नहीं, या तो ऑल्ट F4 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है कि जब मैं हार रहा हूँ और कोई ओपोनेंट जो है वो सिर्फ बॉल लेके टाइम वेस्ट कर रहा है। और या फाइनली इट्स एंड, एंड उसी के साथ एफसी गोवा और 3 पॉइंट लेके जाएंगे और उसी के साथ साथ टेबल टॉप पे अपना नाम जो है वो कंक्रीट के साथ पूरा बना देंगे। Yeah, I mean, it's literally history in the making for FC Goa. A dream run still going on. The Cinderella story. Haven't lost even a single game. 8 out of 10. 100 marks till now. And 24 points is where they sit at. A lot of clubs have tried. A lot of clubs have gotten to the point where they could force them to a defeat. But they just are relentless. Never give up. And FC Goa this time in this beautiful fixture, we thought Bengaluru FC might have had what it takes. And it was a cracking start, you know, with CJ and Vanshaj going for a tie, but it all came falling down. The skies just went down under in the co-op. A humiliating defeat, and from then onwards, it felt like Bengaluru FC could just not recover. And FC Goa just went on, crushed them apart, absolutely decimating them. And if Bengaluru FC, one of the top clubs in the eISL this season, cannot stop them, who on earth is going to go on and do that? आई थिंक इस पूरे eISL सीजन 2 क्वालिफायर्स के सेकंड लास्ट मैच जो होने वाला है, अभी तो सिर्फ उसके लिए होप्स है। वैसे हम लोग नहीं चाहते कि एफसी गोवा का स्ट्रिक टूट जाए, बट हाँ, एक जो टक्कर है वो कौन दे पाएगा वो जानना बहुत ज़्यादा
जरूरी हमारे लिए एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हम ये जानने के लिए कि कौन रोक पाएगा एफसी गोवा को। सो वो जो गेम है वो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस एफसी गोवा के बीच में देखने के लिए मिलेगा 26 अप्रैल को शाम के 8 बजे। तो या मे बी वो एक मैच हो सकता है जिधर हम लोगों को एफसी गोवा शायद हारते हुए दिखे। उसको छोड़ के तो और लग नहीं रहा, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो है वो एफसी गोवा के ईस्ट बंगाल एफसी के साथ है। ईस्ट बंगाल एफसी का कुछ खास क्या नहीं है ये सीज़न और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। सो आई थिंक एफसी गोवा के लिए तो कम से कम इधर से 27 पॉइंट्स तो सिक्योर होने वाले इस पूरे सीजन के क्वालिफायर से। I mean, 30 भी करा लीजिए at this point because I don't know, man. To be honest, if Bengaluru FC go on getting defeated like that, Northeast United FC, I think Saransh and Imad have to literally pull off a miracle that night. You know, just maybe cut their internets off or whatever, do something. But yes, FC Goa, you know, go on undefeated, an absolute force of nature. Vanchaj and Adi Zima, two players that have come in and you know, at this point this season feels unfair for the other clubs. How on earth did these two players match, you know, come up and form a team together? Of course it was Vanchaj retained and Adi Zima went in through the qualifiers. But a quick look at the MVP, who's it going to be? And I think it's going to be none other than Adi Zima. And 5 goals scored for him, and his first time he makes it as an MVP. And you know, this player, he's just beautiful, right? He's been one of those players that has you can always rely on, ever so dependable, and gets the job more often for his club and gets that W. But for Bengaluru FC, जो कहते हैं ना दांत खट्टे कर दिया आज उनके, कुछ वैसा ही हाल हुआ है। एंड इस समय तो मतलब पूरे सोच में पड़ गए होंगे कि वो कोऑप गेम से आई डोंट थिंक वो उभर पाए थे, टू बी ऑनेस्ट। यस, वो कोऑप गेम के शुरुआती कुछ मिनटों पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस गया था एंड स्पेशली अगर हम लोग देखें तो उधर पासिंग गेम से ज़्यादा उधर रनिंग गेम ज़्यादा हो रहा था स्पेशली फॉर एफसी गोवा, क्योंकि देखिए दोनों प्लेयर्स एकदम साइड बाय साइड रन निकाल रहे थे, बैक टू बैक। एक पास पीछे ढकेल के देन आगे जाओ एंड दोनों पास निकलो और उधर खत्म, डिफेंस तो उधर ही खत्म हो जा रहा था। तो यही था कुछ आज का सिनेरियो। और यानी कि एफसी गोवा क्या खा के आते हैं रोज खेलने के लिए, वी डोंट नो, बट मैं भी खाना चाहता हूँ ऐसा खाना जिससे कि मैं भी अनबीटन हो जाऊँ पूरे जिस भी काम करूँ मैं उसमें। You know, pretty sure we're gonna have one of those players coming on with an interview for us sooner or later. But for now, and we'll ask them. But for now, folks, we are done with this particular matchup. But when you think that, yeah, I think eISL is done and dusted, no, a very crucial fixture awaits you after this short little break.